all, and I'm very happy for active participation. This is an excellent participation. Uh, let's start with the uh, simple and major one of the presentation I'm presenting and discussing with you all. Uh, so I think you all of them know we are discussing today the leadership essential for pharmacy profession. आज हम ये discuss करेंगे. I will try to discuss most of the stuff in Urdu. Will try so that I have seen that many of the people can grab uh, better if I will discuss in Urdu. So we'll try to talk in Urdu most of the time. So before going to start the leadership in general, I would like to share one of the stories of the five monkeys. शायद कुछ लोगों ने इसको सुना भी हो, but this is a very interesting story. Listen and let's see what this lesson we learned from this story. There's a group of scientists placed five monkeys in a cage and in the middle a ladder with the bananas on the top. साइंटिस्ट ने देखा कि पांच बंदर उन्होंने लिए, उन्होंने पिंजरे में बंद करके अंदर दरमियान में एक सीढ़ी रख दी और उसके ऊपर केले रख दिए. एंड यू नो इज अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना. बंदरों ने जाहिर बात है वो ऊपर चढ़ना है और उसको खाना है, केलों को खाना, बिकॉज उसकी ये बड़ी हम क्या कहते हैं उर्दू मरगूब गजा है. नाउ सिंपली हैपेंड वन ऑफ द monkey went up to the leader and look at and try to eat the bananas. Now what happened, what he done, वो जो बाकी चार बंदर नीचे खड़े थे उन्होंने उसके ऊपर आइस्ड और वेरी कोल्ड वाटर गिरा दिया. और ये एक्सपेरिमेंट जो है उसने रिपीट किया, बार बार रिपीट इसलिए किया कि जब भी केले रखे जाते थे तो बंदर ऊपर चढ़ते थे, तो उसने इसको रिपीट किया बार बार. नाउ व्हाट हैपेंड, दे रियलाइज कि जब भी कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ता है और केला खाने जाता है, ये तो हमारे ऊपर ठंडा पानी गिरा दिया जाता है, आइस कोल्ड वाटर. एंड वो इतना यानी कि मजबूर हो गए, उन्होंने कहा कि अब अगर कोई ऊपर चढ़ा तो हम उसको मारेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ जब भी कोई चढ़ता है तो उसको गर्म या ठंडा पानी बहुत ज्यादा करा दिया था. सो आफ्टर सम टाइम नाउ मंकी डेयर टू गो अप द लैडर रिगार्डलेस ऑफ द टेम्पटेशन. वो डर गए कि यार ऊपर जाते हैं ठंडा पानी आता है. नाउ व्हाट दे डन, साइंटिस्ट ने क्या किया, उसमें एक बंदर को चेंज किया, उसमें एक बंदर को बाहर निकाल दिया, एक बंदर को चेंज कर दिया. अब जो नया बंदर था, ही हैज नो आइडिया कि जब भी मैं ऊपर सीढ़ी पे चढ़ूंगा तो मुझे कुछ कहा जाएगा. सो व्हाट हैपेंड, जैसे ही वो केले खाने के लिए ऊपर चढ़ा, क्या हुआ, द फर्स्ट थिंग दिस monkey did was to go up to the other. Immediately the other monkeys beat him up. उन्होंने उसको मारना शुरू कर दिया. He was surprised कि what happened, मैंने क्या किया. Now what they done, उन्हें दूसरा चेंज किया, तीसरा भी चेंज किया, चौथा भी चेंज किया, और होते होते पता लगा उन्होंने पांचों के पांचों मंकी चेंज कर दिए. Now interestingly what happened, they have no idea. ये नए मंकीज ने इनके ऊपर कोई ठंडा पानी नहीं गिराया गया, कभी भी नहीं. But what happened, whenever they climbed up, the rest of the monkeys start beating up. So what happened actually? It was possible to ask the monkey why they would beat up, and all those who attempted to go up to the leader, कोई पूछेगा कि हुआ क्या, क्योंकि आप लोगों को तो हमने कुछ किया नहीं. And you know what they said, I don't know, that's how things are done around here. वो कहते जी हमें तो पता नहीं था, बस मैंने तो देखा है ये मारा जा रहा है तो मैं भी इसलिए मार रहा हूँ. तो दिस इज साउंड फेमिलियर कि जब जैसे सब लोग कर रहे थे मैं भी इसको वैसे ही कर रहा था. So lesson is what? Don't miss the opportunity to share this with others as they might be asking themselves. प्रॉब्लम किधर है एक्चुअली, हमने इसको देखना है. प्रॉब्लम अगर हम देखें तो प्रॉब्लम किधर एग्जिस्ट कर रही है. प्रॉब्लम ये इधर एग्जिस्ट कर रही है कि हम जब भी किसी सिस्टम में एंटर होते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमारा फेलियर भी है इस वक्त ऑल ओवर द इन मेनी ऑफ द सेक्टर, इन मेनी ऑफ द सेक्शन, फार्मेसी को आप ले लें खास तौर पे, तो हम जब भी जाते हैं तो जैसी चीजें चल रही होती हैं हम उसी को ही साथ लेके चल रहे होते हैं, हम कोई चेंज नहीं लाते. द प्रॉब्लम इज व्हाट, द चेंज. हम ये कहते हैं कि जी ये प्रैक्टिस ऐसी ही चल रही थी जब मैं यहाँ आया था, आज 20 साल हो गए वैसे ही मैं चला रहा हूँ. हम इवन ये भी नहीं सोचते कि वो प्रैक्टिस क्यों की गई थी, उसको क्यों ऐसा किया गया था. फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अगर एक फार्मेसी में आया तो मैंने वहाँ प्रैक्टिस देखी कि जब भी वहां पे एक रूम है और वहां पे थर्मामीटर नहीं लगाया हुआ टू रिकॉर्ड द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. नाउ व्हाट हैपेंस टू मी, तो मैंने उस प्रैक्टिस को कहा ये पहले से ही चल रही, तो मैंने सोचा इसकी जरूरत नहीं है तो मैं भी नहीं करता कुछ चेंज इसमें. तो दिस इज अ प्रॉब्लम. सो
First of all, the most important lesson I would like to share with you, the change theory of the leadership. Leadership जो है ना, these are mostly the change makers. ये प्लीज याद रखिएगा हमेशा. If you are not a change maker, तो you can't be a good leader. So whenever you're called to lead, you are called to advance, move forward, improve the situation. You can see all of the pictures here. All of them did some change. They have created some change. Qaid Azam, the Satar, Mother Teresa, you can see Martin Luther King, a very famous person who, uh, fought for the rights of the people. Nelson Mandela, and Vladimir Putin, these are all very big leaders in their own era. And the most important part is the change theory. Actually, think about one of the parts of the change theory. Now, look at some, whenever you are going to make some change, so please remember, growth always is very painful. And whenever we are saying change is obviously a very painful. This is one of the major problem, or one of the major bottleneck whenever you start to working in any profession of the pharmacy, in any sector of the pharmacy, you will face the problem. मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ. When I was joined शौकत खानम, तो मैंने यहाँ पे आके जाके हम ऑनलाइन प्रिस्क्राइबिंग स्टार्ट करेंगे. And this is the biggest change. Nobody was happy to cope with that change. उन्होंने कहा ये थी अमेरिका में तो नहीं होता, तो हम क्यों करें. आई सेड अगर अमेरिका में ये नहीं कर रहे तो जरूरी नहीं कि हम भी उसको ना करें. And I remember when I was started changing the paper prescribing toward the online prescribing, उस वक्त अमेरिका में 36% ऑनलाइन प्रिस्क्राइबिंग होती थी. You can imagine, I mean, how much the level of the prescribing is currently going on that time. So remember, whenever you are going to make a change, this is always painful, but whenever there is nothing as painful as staying stuck somewhere, you don't belong this on that side. लीडरशिप क्या चाहता है? वो कहता है चेंज इंस्पायर्ड बाय. अगर आप खाली बोलते रहेंगे, इज नथिंग, नन ऑफ एनी हैपन. चेंज इंस्पायर्ड बाय योर एग्जांपल. जो आपने अपनी एग्जांपल खुद बनानी है. इसमें एक टिप मैं देता चलूं. व्हेनेवर यू गोइंग टू मेक ए चेंज, तो इसका सबसे बड़ा असूल क्या होगा? सबसे बड़ा एक मेजर आपके एक टिप क्या होगी? ब्रिंग द चेंज ऑन योर ओन सेल्फ. फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं आज सुबह सब लोग 8 बजे ऑफिस होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको भी 8 बजे सुबह ऑफिस होना बहुत जरूरी है. आप कहते हैं जी आज सब लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू या अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन की करनी है, और जब भी आपने करनी तो आपने 7 एलिमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन लाजमी देखने हैं. तो आर यू ऑल्सो फॉलोइंग दिस रूल और नॉट? तो सबसे पहले वो रूल्स अपने ऊपर अप्लाई करें. दिस इज द मेजर वन रूल टू ब्रिंग द चेंज. Now there are different leadership theories. I'm not going in detail all these. So this is just a snapshot. कि there are learning phase में हम लोग हैं, अभी आप लोग भी हैं, and there are different theories. Trait theory, contingency, relationship, great man, situational behavior, participative management. There are different theories. So I'm not discussing in detail, but just to remember, इस पे हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं अब तक, इस पे हजारों स्टडीज हो चुकी हैं, and still going on to define the leadership basically. So as far as the name is concerned, look at the leadership definition. Simply, leader क्या होता है? Leader is coming with the word from the lead actually, who leads someone. So secondly, leader को जब हम कहते हैं जो lead करता है, वो the most important part, वो किसी को influence करता है, मुतासिर करता है. This is one of the leaders quality. आपने भी माशाल्लाह सब लोगों ने बहुत अच्छे कुछ qualities आपने लिखी हैं, and I am happy कि you have a very good लीडरशिप. आप में कुछ स्पार्क मुझे नजर आ रहा है. उर्दू में आप यू कैन सी लीडर वो होता है जो दूसरों को मुतासिर या उसकी रहनुमाई करता है. मेरी नजर में अगर मैं देखूं तो हु इज द मोस्ट बिगेस्ट लीडर इन द हिस्ट्री, अगर मैं आपको एक शेयर करूं माइकल हार्ट्स रैंकिंग ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द हिस्ट्री, मे बी समबडी हैव हर्ड दिस. अगर वो पढ़ने का मौका मिले तो उसमें सबसे ऊपर नाम जो है वो हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. And I believe because why he put Muhammad, peace be upon him, number one. He said because even after the 13th century after his death, his influence is still powerful and pervasive. This is the major, you can see the leadership quality. ये आगे चल के मैं बताऊंगा. लीडरशिप क्वालिटी में एक ये भी एसेंस आता है कि अगर आप उस जगह पे नहीं हैं, तो फॉर एग्जांपल इफ यू मेक ए एग्जांपल, जैसे कि मैंने शुरू में कहा,
सॉरी, जी किसने कुछ कहा? ओके, एमन कैन आई कंटिन्यू? इज दिस ओके? So yes, you continue please. ओके, थैंक यू वेरी मच. Okay, look at one example. So ये practical skill है. I will discuss in detail later on. Lead, influence और guide करता है. And the most important one is this is a process. याद रखिएगा. Leadership ये नहीं होता कि मैं बाजार से जाके इसको खरीद लूं. No, never ever. Leadership में ये नहीं है कि मैं जाके डिग्री एक जगह से ले लूं. No, never ever. So actually it uh, a process where one person is able to enlist the aid and support of others in accomplishing a common task. तो लीडरशिप जो है प्रोसेस है, कॉमन टास्क है, कॉमन गोल की तरफ चलता है और उसमें कुछ वो लोगों को डिफरेंट इन्फ्लुएंस करता है और उसका कोई आउटकम और उसका डिसीजन भी आता है साथ साथ. सॉरी. सर आप कंटिन्यू करें. ओके, थैंक यू वेरी मच. सो ये जो प्रोसेस है हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं, विल डिस्कस इन डिटेल. नाउ मूविंग टुवर्ड वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन एंड मिथ इज दिस. somebody thinks about the leadership were born, actually वो पैदा ही होते हैं लीडरशिप, एज ए लीडरशिप पैदा होते हैं. बट another one theory say no, you must have to nurture yourself. आपने अपने आप को बनाना है, निखारना है. So most of the time, leaders are more likely nurtured than born. Please remember, this is very important. What I'm repeating again, so it has been evident that leaders are more likely to nurtured. आपने अपने आप को खुद बनाना है. ये by default आप खुद नहीं हो सकते कि माँ के पेट से आप पैदा हुए हैं. It is a, in other sense, it is a complex issue, but most experts agree that leadership is a combination of nature and nurture. Please remember, it's a combination of nature and nurture. So leadership isn't an all or nothing proposition. You can develop leadership skill regardless of your starting point. Anytime you can start or think about this. So जब आप नर्चर की बात करते हैं तो यू नीड ऑल दीज थिंग जो कि अभी आपने मुझे बताए भी सही, अभी आपने शुरू में पार्टिसिपेट भी किया. And communication, delegation, motivation, and so many other you have already given a very good traits of the leadership. Now look at this. So success is not always. लोग समझेंगे बहुत आसान काम है, but the hard work behind that is very high. अच्छा, बिफोर टुवर्ड हम लीडरशिप को समझने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा ये डिफरेंशिएट भी देख करना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होती है, व्हाट इज लीडरशिप? सो मैनेजमेंट क्या है जिसमें मैनेजर इन्वॉल्व है, और मैनेजर क्या करता है बेसिकली. इसमें पिक्चर में आपको नजर आ रहा है, लीडर लीड करता है बेसिकली, वेरी सिंपल. मैनेजर हुक्म चलाएगा, जाओ भी ये काम करो. सो मोस्टली अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल लीडर्स are often or most of the time are also a very good manager. But this doesn't mean that all managers are a good leadership. No, never ever. So manager generally focuses on more operational aspects basically, which is budgeting, planning, hiring, developing employees. ये उस पर थोड़ा सा manager focus कर रहा है. But on the other side, leader basically emphasize on the big picture. अच्छा, big picture की मैं जब बात करता हूँ ना, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इफ आई वाज हायर्ड एज ए मैनेजर फार्मेसी एट शौकत खाना, तो मेरे जहन में एक बिग पिक्चर थी. बिग पिक्चर क्या थी? बिग पिक्चर ये थी कि माय फार्मेसी डिपार्टमेंट मस्ट लीड इन द रीजन. अब मैं जब भी लव यूज करूं, मस्ट लीड इन द रीजन विद सिमिलर टू अदर हॉस्पिटल फार्मेसी, तो मेरा एक विजन था, मेरा एक गोल था. तो ये जो विजनरी लीडर होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनका कोई विजन होता है, वो हमेशा किसी जर्नल मिशन या उसको लेके चलते हैं. जो मैनेजर है वो मिनिएचर सी चीजों में रहता है सिर्फ. दिस इज द मेजर डिफरेंस. सो मैनेजमेंट इन अदर सेंस, एक और भी हम टर्मिनोलॉजी, इज डूइंग थिंग्स राइट बेसिकली, बट लीडरशिप इज डूइंग व्हाट, ही इज डूइंग द राइट थिंग्स बेसिकली. रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट फ्यू ऑफ द एग्जांपल मोर, ये आपको क्लैरिफाई मजीद भी हो जाएगा. तो बॉस क्या कहता है, समझा रहा है, आप देखें कि लुक एट द पिक्चर, हाउ इट इज डन, आपने ऐसे करना है. बट लीडर उसको खुद करके बता रहा है. Now, this is the difference between the leader and the boss or the manager. This is one of the example. See one another one example. तो लीडर बॉस जो होगा वो हमेशा क्रेडिट ले लेगा. क्या होता है, समटाइम ये जो आपका एम्प्लॉय है
वो जब काम करता है उसका क्रेडिट ले लिया जाता है, बड़े साहब ले लेते हैं. This is not a trait of the leadership. This leader always give a credit basically. Please remember. अच्छा, ये मैं आपसे जो चीजें डिस्कस कर रहा हूँ ये वो चीजें भी हैं जिसको आपने नर्चर भी करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने नर्चर करना है कि आपने लीड करना है, आपने अपने आप को डेवलप करना है कि क्रेडिट देना है लोगों को. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बिल्ड द रैपो ऑफ योर डिपार्टमेंट एज वेल एज द एम्पैथी एज वेल एज द कंपैशन विद इन द डिपार्टमेंट. अगर आप क्रेडिट लेंगे दूसरे एम्प्लॉय का तो आपके अपने डिपार्टमेंट की जो वैल्यू है, जो एनवायरमेंट है, वो बहुत खराब हो जाएगी. बॉस हमेशा क्या करता है, कमांड करता है, हुक्म देता है. लीडर क्या करता है, वो हमेशा पूछता है हाउ कैन वी डू दिस, कैसे करें हम मिलके. ठीक है. बॉस हमेशा कहता है आई हैव डन दिस, आई डिड दैट, आई विल डू दिस. वो हमेशा सेज आई का यूज करता है, लव. लीडर कहता है नो, वी हैव डन, वी हैव एज अ टीम वर्क वी हैव अकम्प्लिश दिस टास्क. तो क्रेडिट वो हमेशा खुद नहीं लेता, वो सबको दे रहा था. दिस इज रिफ्लेक्टिंग ए टीम वर्क ट्रेड बेसिकली. बॉस हमेशा एडवांटेज ले रहा है लेकिन लीडर एम्पावर करता है. एम्पावरमेंट इज एक्सेलेंट. अनदर वन जो कि मुझे लगता है पीछे लोग किसी ने यूज भी किया था अलग. दिस इज अ यू नो हेल्प टू नर्चर, हेल्प टू ग्रो, ग्रोइंग द एम्प्लॉय विद इन देयर विसिनिटी. जब वो ग्रो करता है तो वो परफॉर्म बहुत अच्छा करेगा और उसकी परफॉर्मेंस जब बहुत अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आप अपने टास्क, अपने गोल बड़ी आसानी से अचीव करेंगे. बॉस हमेशा ब्लेम करेगा, कोई गलती कर ले, कोई कहेगा लो भी आपने गलत काम किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, वरना मैंने तो बहुत अच्छा कहा था आपको. दिस इज द प्रॉब्लम विद द बॉस. सो प्लीज रिमेंबर, डोंट ब्लेम द ह्यूमन बीइंग, ऑलवेज ब्लेम टू द सिस्टम. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आई हैव सो मेनी एग्जांपल वेयर आई हैव सीन दैट कि लोगों ने गलती की है. मैं एग्जांपल देता हूँ. एक प्रिस्क्रिप्शन आई है, प्रिस्क्रिप्शन पे वो हम उसकी स्ट्रेंथ लिखना भूल गए फॉर एग्जांपल, या आप उसकी इंस्ट्रक्शन देना भूल गए. तो आई सेड फार्म, तो मुझे ना किसी ने आके जी फार्मासिस्ट ने वो टाइप करना भूल गया था. मैंने कहा नहीं, ये इसकी गलती नहीं है, मेरे सिस्टम की गलती है. देन आई क्रिएट अ मोर रूबस्ट सिस्टम. मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम से अटैच किया. अब बाय डिफॉल्ट क्या था, वो इसकी इंस्ट्रक्शन बाय डिफॉल्ट आई थी. तो आई नेवर ब्लेम एनी टाइम, कभी भी मैंने कभी भी किसी शख्स को ब्लेम नहीं किया. आई ऑलवेज ब्लेम द सिस्टम. एंड लीडर ऑलवेज लुक एट द प्लान बी. ओके, प्लान ए ने काम नहीं किया, लेट्स टॉक अबाउट प्लान बी. ठीक है. बॉस कहता है बॉस कहता है जाओ जाके काम करो, लीडर कहेगा लेट्स गो. नाउ दीज आर द सम ऑफ द वेरी सिंपल एग्जांपल आई हैव शेयर विद यू. आई होप यू ग्रैब अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट हाउ द लीडर्स एक्चुअली वर्क. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन सेकंड ये आता है, व्हाई इज लीडरशिप नीडेड. आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, यार जरूरत क्यों है, मैं क्यों करूं. आई मीन मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं सारे नर्चर और ये सारी चीजें करूं. इसके तीन पर्पस हैं जो कि मैंने यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं. अच्छा, इसमें नंबर वन है सिक्योरिटी एंड सेकंड इज द पर्पस एंड थर्ड इज द अचीवमेंट. आपको पता है जब भी आप, जब एक बच्चा पैदा होता है, आपको पता है उसका सबसे बेस्ट लीडरशिप कौन होता है, वो उसके पेरेंट्स होते हैं. मेरा अगर लीडरशिप मुझसे पूछे शुरू में कौन था, वो मेरे वालिद थे. आपके भी वालिद और आपकी मदर हो सकती हैं, और मे बी सम अदर गार्डियन. वो एक्चुअली आपको सिक्योर करते हैं. अच्छा, सिक्योर करने का क्या मकसद है, सिक्योर करने का मतलब है कि वो अगर खुदा न खास्ता आप साइकिल चलाना सिखा रहा है तो वो कहीं आप गिर ना जाए, वो आपको सिक्योर करता है. वो आपको पढ़ना सिखाते हैं, वो आपको लिखना सिखाते हैं, और वो आपको तमाम हर्डल्स और बैरियर से बचाते हैं. दिस इज द मेजर रिक्वायरमेंट. तो लीडरशिप हमें इसलिए चाहिए क्योंकि लीडरशिप की ट्रेट है, वो आपको गाइड करेगा और वो आपको थ्रेट्स और बिहेवियर से, बैरियर से बचाएगा. दैट्स व्हाई वी आर एम्फसाइज ऑन द सिक्योरिटी. सेकंड इज द पर्पस. लीडर हमेशा विजनरी होगा, जैसे कि मैंने पहले कहा. उसका वो माइक्रो मैनेजमेंट पे नहीं जाएगा, उसका विजन बड़ा होगा, उसका कोई पर्पस होगा. जैसे मैंने कहा, वो एक डेवलप करता है बिग पिक्चर को. सो दिस इज द सेकंड मेजर पर्पस व्हाई वी नीड लीडरशिप. थर्ड होता है अचीवमेंट. अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप कोई चीज अचीव करते हैं, एक तो पहले आपको वो हेल्प करेगा अचीव करने की, और वो उस अचीव करने में वो आपको पूरी क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा अपनी एबिलिटी को, परफॉर्मेंस को. और फिर उसको आपको क्या करेगा, आपको थपकी भी देगा, शाबाश भी देगा कि यस यू हैव डन वेरी वेल.
So these are the things which actually motivate you. Motivation is a very, very excellent tool. I have seen many time, हमारे यहाँ culture ही नहीं है. कोई शख्स काम कर ले हम कहते हैं okay, why not say thank you? So please remember, if you are a leader, please endorse their achievement. This is highly, highly very important. मैंने देखा है, मैंने किसी शख्स को अगर कह दिया सिंपल गुड एक्सीडेंट, उसका 2 किलो खून ही भर गया, एंड ही वाज नेक्स्ट टाइम वेरी एंथुसियास्टिक कि यार मैंने अब दोबारा और ज्यादा अच्छा करना है. तो दीज आर द थिंग्स द लीडर्स हैव दिस, एंड वंस यू हैव दिस यू हैव अचीव योर गोल एंड पर्पस. ठीक है. एंड इसमें कुछ इन्होंने चीजें मजीद भी लिखी हैं, गोइंग नॉट इन डिटेल, कि अगर लीडरशिप नीडेड क्यों होती है, क्योंकि आपको डायरेक्शन विजन चाहिए, मोटिवेशन इंस्पिरेशन चाहिए. लीडरशिप हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, टीम वर्क में, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. एंड इन फार्मेसी प्रोफेशन अगर हम देखें, हम कहते हैं व्हाई वी नीड ए लीडरशिप. अगेन प्लस माइनस वही है, मिलते सिमिलर है, बट इवॉल्विंग फार्मासिस्ट रोल है. अगर मैं थोड़ा सा पीछे बैक जाऊं हिस्ट्री में, तो पहले सिंपल डिस्पेंसिंग थी, फार्मासिस्ट सिंपल डिस्पेंसिंग करता था रिटेल फार्मेसी में, मेडिसिन सिंपल बनाना एंड देन डिस्पेंस. लेकिन अब रोल उसका थोड़ा सा बढ़ गया है, डिस्पेंसिंग वो थोड़ा मैनेजमेंट की तरफ आ गया है. मैनेजमेंट से ही इज नाउ ए फुल मैनेजर. मैनेजर के बाद वो आप डायरेक्टर्स लेवल पे आ रहे हैं, चीफ ऑफ फार्मासिस्ट भी मान रहे हैं, तो देयर रोल इज नाउ एक्सपैंडिंग. तो वंस योर रोल एक्सपैंडिंग मींस you have now much more involved in the medication management use. Once you in the MMU, mean medication management use, you must require leadership qualities. This is the major requirement of, as a pharmacy profession. एडवोकेसी, ऑब्वियसली आप एज एडवोकेसी प्रोफेशन में आपकी बहुत ज्यादा होती जा रही है. यू रिक्वायर लीडरशिप क्वालिटीज. इम्प्रूव्ड पेशेंट केयर, जब हम पेशेंट केयर की बात करते हैं, तो हम एक बात करते हैं, अब जो नया एक हम स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स, वो 3-4 स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड. उसमें सबसे फेमस स्टैंडर्ड यू कैन से JCI स्टैंडर्ड है, जिसको हम कहते हैं जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, USA स्टैंडर्ड है. और भी स्टैंडर्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं, and there are certain other AHRQ standards भी हैं, but these are very famous. What they are saying, वो ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी अप्रोचेज हैं, there must be a patient centric approach. Patient centric approach mean whatever you are thinking, आपका मकसद, आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पेशेंट होगा. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी कमरे में लाइट्स लगानी है, तो मैं फिर वहां सोचूंगा कि यार पेशेंट अगर यहाँ बैठा होगा तो वो कैसा महसूस करेगा. मैंने उसके जाविये से, उसकी परसेप्शन से सोच. अगर मैं एक फ्लो बना रहा हूँ कि पार्किंग कैसे होगी, मैं अभी सिर्फ नॉन टेक्निकल बात कर रहा हूँ, अभी मैं क्लिनिकल की तरफ आता हूँ, तो मैंने सोचना चाहिए पेशेंट अगर आएगा तो कैसे वो ड्रॉप ऑफ होगा, कैसे पिक ऑफ होगा. सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल. अब अगर मैं पेशेंट केयर पे आता हूँ, तो मैं ये कहूंगा अच्छा अगर पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है, तो हाउ कैन वी रिड्यूस द मेडिकेशन देयर. फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन थेरेपी, like at the level of prescribing, at the level of filling or dispensing, at the level of administration of the medicine, or at the level of discharge. So how can I improve the patient care? मैं ड्रग इंटरेक्शन को कैसे डील कर सकता हूँ, मैं पेशेंट के लेंथ ऑफ स्टे को कैसे कम कर. तो दीज आर ऑल रिक्वायर सम चेंज, some vision, some goals. So that's why we need some leadership qualities. अडेप्टिंग टू चेंज मैंने इसमें काफी डिस्कस किया, एंड ऑब्वियसली मैनेजिंग टीम. जो टीम को जब आप मैनेज करते हैं, दिस इज अगेन द ट्रेट ऑफ द लीडरशिप. सो लीडरशिप ट्रेट में मैनेजिंग टीम इज रिक्वायर अ मेजर रिक्वायरमेंट, बिकॉज आपको पता है फॉलोअर होता है लीडर का, उसकी टीम्स होते हैं, उसके ग्रुप्स होते हैं. तो दैट्स व्हाई इन द फार्मेसी प्रोफेशन प्लीज रिमेंबर वी मस्ट एंड ऑलवेज रिक्वायर ए लीडर एंड ए लीडरशिप क्वालिटी. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज है. आई वुड लाइक टू explain a little bit, 1 or 2 minutes spend on this. Leader's job is not about being in charge, it's about taking care, rather is those of in our charge. लीडर जॉब ये नहीं है कि हमने किसी का चार्ज लेने है, यानी कि मैं आया हूं और मैंने कहा ठीक है मेरे अंदर लोग बैठे हुए. हमने बेसिकली लीडर्स की जॉब ये है टेकिंग केयर ऑफ दो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑफ दोज इन आवर चार्ज. यानी कि हमने उनकी केयर करनी जो हमारे अंडर काम कर रहे हैं, हमने उनकी केयर करनी है. प्रॉब्लम किधर आ रही है? प्रॉब्लम माइक्रो मैनेजमेंट में आ रही है. आजकल क्या हो रहा है असल में, हम करते क्या है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, खासतौर हमारे प्रोफेशन में भी है. वी आर नॉट मेकिंग गुड लीडर. प्रॉब्लम क्या है?
प्रॉब्लम ये होती है, आप जब किसी फार्मेसी में काम करने जाते हैं तो वो आपको काम सिखाना शुरू कर देता है। आप काम सीखते रहते हैं और काम बहुत अच्छा करते हैं, और आप उस काम को सरअंजाम भी उसी तरीके से देते हैं जैसे वो आपको बता रहा है। उसके बाद क्या होता है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, आपको प्रमोट कर दिया जाता है। जब आप प्रमोट हो जाते हैं तो मे बी यू आर मोटिवेटेड और आप मजीद बेहतर काम करते हैं, एंड अ टाइम कम्स कि जब आप खुद मैनेजर बन जाते हैं। ठीक है, अब आप मैनेजर बन गए तो प्रॉब्लम कहाँ हुई, आपको माइक्रो मैनेजमेंट तो सिखा दी गई। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको ये बता दिया गया कि बजट कैसे बनेगा, बिलिंग कैसे होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि हाउ टू बिकम अ गुड विजनरी लीडरशिप, हाउ कैन वी परफॉर्म आउट ऑफ द बॉक्स, वो नहीं बताया गया। वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। दैट्स व्हाई वी आर स्टक वेयर, जैसे कि मैंने मंकी स्टोरी बताई थी। हम सोच ही नहीं रहे कि कुछ चेंज भी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम क्या करें, जैसे आते हैं जो हो रहा है हम कहते हैं ठीक है, दैट्स फाइन। सो इसके लिए कुछ थोड़ा सा सोचना है बेसिकली, कि हम हाउ कैन वी इम्प्रूव दिस। तो इसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी और एक ट्रांजिशन फेज में आना पड़ेगा, जहां पे हमने देखना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं, कुछ क्विकली, कुछ जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल ही इस ट्रांजिशन फेज में आते ही नहीं है। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगेन दिस इज ए स्किल, अगेन दिस इज ए स्किल, लाइक ए प्रैक्टिकल स्किल है, लर्नेबल स्किल है। अगर आप इसको लर्न करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार। लफ्ज मैं प्रैक्टिस इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज आई एम स्पोर्ट्स मैन, मैं था कभी स्पोर्ट्स में था। आ, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं बेस्ट एथलीट रहा था, एंड आई मीन इंटरवर्सिटी भी मैं, मेरा रिकॉर्ड है 100 मीटर रेस का। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जब आप मोस्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं क्या होता है पता है, सिंपल मैन, एज अ स्पोर्ट्स मैन मैं सोच रहा हूँ, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते जाते हैं। ठीक है, सो आप इतनी ज्यादा लीडरशिप की प्रैक्टिस करें, यू विल बी अ लिटिल बिट मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इन द लीडरशिप क्वालिटी एंड स्किल्स। ठीक है, दूसरा, एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे जहन में वो है पेरेंटिंग की। पेरेंट से निकला है पेरेंटिंग। अच्छा, पेरेंटिंग क्या होती है? पेरेंटिंग का मतलब होता है कि यू हैव द कैपेसिटी टू बी अ पेरेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कैपेसिटी है टू बी अ पेरेंट, दिस डजंट मीन दैट यू वांट टू बिकम ए पेरेंट। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कैपेसिटी है और आप लाजमी पेरेंट बनेंगे, एंड डजंट शुड बी अ पेरेंट, जरूरी भी नहीं, ये भी नहीं है। तो सेम लाइक लीडर, यू हैव द कैपेसिटी, बट हाउ कैन यू done this. This is very important. So the capacity to be a leader doesn't mean you want to become a leader and don't should be leader. No, you have to make more practicable and learnable skill. ये आप जब करेंगे तो you will learn more and more. So how to develop this? अच्छा, इसमें आप देखेंगे ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक है, एक आपको नजर आ रही है कुछ पिक्चर। हम लोग ना, कुछ लोग सोचते हैं बस पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। दिस इज गुड, आई एम ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ देम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हम इसको यूज करें। हम क्या करते हैं, हम डिग्रियां की डिग्रियां जमा कर रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते जा रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं। आप करें, लेकिन स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। कुछ ना कुछ शुरू करें प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू कैन डेवलप सम स्किल्स। नाउ लुक एट दिस इज you know the most important slide for me as well, and this is my own percentage. Don't worry, किसी और की नहीं, मेरी अपनी percentage. I have a feeling that कि whenever you are looking towards a success formula, the 98% I have given a marks to never give up. Oh, this is very, 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 very important. I have given 1% luck and 1% talent. अच्छा, never give up is what? अगर आप एक दफा हार गए तो कहेंगे नहीं, दोबारा करना है। ये this is one of the major trait of the leader. इसमें नेल्सन मंडेला ने क्या कहा हुआ है, a winner is a dreamer who never gives up. A winner is a dreamer who never gives up. So this is the trait, the most important, never give up. मेरे पास बहुत से एग्जाम्पल जो मैंने लाइफ में देखी हैं, एंड आई हैव ट्राइड दिस ट्रेट, एंड बाय गॉड से कि वो हो गया, एक्सीलेंट हो गया। तो अगर आप एक दफा नहीं कर पाए, ट्राई इट अगेन, एंड एटलीस्ट यू कैन डू दैट। once again I request to push yourself because no one else is going to do it for you. हाँ चाहिए, ये आपने किसी और ने नहीं करना, ये आपने खुद करना है। ये अगर आपको कहें कि जी कोई और मेरे लिए कर दे काम, तो नो, दिस इज नॉट पॉसिबल।
सो यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल होता है। आपको बताऊँ, आज आप कहते हैं जी मैंने सुबह डेली वॉक करनी है। सो मेनी पीपल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। वो 2 दिन तो कर लेंगे, तीसरे दिन फिर बंद हो जाएगा। सो यू नो, जस्ट लाइक लीडरशिप एज़ वेल, ये शुरू करते हैं, साथ ही आप कहते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। नो, यू हैव टू डू योर ओन सेल्फ। किसी और ने आपके लिए नहीं करना। एंड डोंट बर्न योर अपॉर्चुनिटीज फॉर अ टेम्परेरी कंफर्ट। ये बड़ा प्रॉब्लम है लोगों में, जो कि मैंने भी कहा कि ठीक है 10 दिन कर लिया, उसके बाद 2 दिन का अच्छा यार बहुत पढ़ लिया, अब थोड़ा सा रेस्ट करें। नो नो, इसको ना प्लीज, अपनी अपॉर्चुनिटी अगर आपको बहुत अच्छी मिल रही है तो प्लीज इसको स्पॉइल ना करें, इसको खत्म मत करें। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द अदर वे टू स्किल। अच्छा, ये मुझे किसी जगह से मिली थी। आई हैव सीन दैट एट द लिंक्डइन। तो मुझे ये पसंद है, मैंने इसको कैच कर लिया स्क्रीनशॉट में। लुक एट दिस फार्मेसी, और नीचे आपको नजर आ रहा था कि ये स्टेथोस्कोप है। अच्छा, मुझे इसका मतलब आज तक समझ नहीं आया। मैंने एक दो लोगों से भी पूछा। मे बी यू कैन कमेंट ऑन द sheet, and you can ask some question on this. I'm happy to answer this. But मुझे ऐसा लगा है कि या तो वो पता नहीं बेचारा परेशान था कि मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, लेकिन ऊपर से फार्मासिस्ट बन गया। तो दैट्स अ सेपरेट इशू। बट रिमेंबर व्हाट आई वुड लाइक टू गिव यू अ मैसेज: स्टे इन योर लेन, कीप योर eyes and faith on yourself. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे भी हो सकता है अगर अल्लाह ने आपको इस जगह रखा ना, तो हो सकता है उसमें बेहतरी होगी, उसमें कोई मसलियत होगी। तो प्लीज, वेयर एवर यू आर, ट्राई टू एक्सेल इन योर फील्ड। अच्छा, ये बड़ी प्रॉब्लम, जब आप इधर उधर भागेंगे ना तो कोई भी चीज आपके हाथ नहीं आएगी। तो एक्सेल इन योर ओन capacity, in your own field, in your own expert area, जहां पे आप समझते हैं आप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं जिसमें थोड़ा सा एक ऐड करता जाऊं। सो मेनी पीपल थिंक्स दैट आई वुड लाइक टू वर्क इन हॉस्पिटल, आई वुड लाइक टू वर्क एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मे बी आई वुड लाइक टू बी फिट वेरी वेल इन द इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल। आपके आपके टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, मैं उधर बैठा। तो दिस इज योर यू नो एरिया वे यू हैव टू रिव्यू एंड थिंक अबाउट कि मैं कहाँ बेहतर हूँ। जहां पे आपको लगता है, देन एक्सेल योरसेल्फ, वहां पे अपने आप को नर्चर करें, स्टार्ट। मे बी यू कैन फाइंड ए बिग यू नो दिस डायमंड, या आपको डायमंड थोड़ा सा बड़ा शायद आपको मिल सके। Okay, so there are a lot of other one. I'm not going in details because we have uh, discussed few more things. So ये simple again developing skills हैं। सेल्फ अवेयरनेस आपको अपनी होनी चाहिए। फॉर्मल ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सजेस्ट यू कैन get some formal training, because formal training help you to gain some knowledge, and then the most important, उसको आप प्रैक्टिकल करें, उसके प्रैक्टिस करें। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, 360 डिग्री फीडबैक है। 360 फीडबैक का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन फार्मेसी, तो आप कहते हैं जी मेरे जो अबव लेवल पे मेरा जो बॉस है, मुझे मेरे मुतालिक परफॉर्मेंस अप्रेजल करे, मेरा फॉर एग्जांपल मेरे मुतालिक फीडबैक दे। मेरे जो पीयर्स हैं, लाइक मेरे ही पोजीशन के लोग, वो मुझे मेरे मुतालिक बताएं। फिर मेरे जो नीचे जूनियर, वो मुझे बताएं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स कौन है। तो दिस इज ऑल कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक। वंस यू हैव द 360 डिग्री फीडबैक, आप हैरान होंगे कि आप कहेंगे यार मुझ में तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि ठीक होने वाली हैं, एंड दिस विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माय ओन सेल्फ। इसको देखें। कोचिंग मेंटोरिंग, ये जैसा मैंने कहा, कोचिंग मेंटोरिंग के बगैर लीडरशिप स्किल नहीं आ सकती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई एम अ स्पोर्ट्स मैन। मेरा जो कोच और मेंटोर था स्पोर्ट्स में, मेरे अपने वाले साहब, बिकॉज ही वाज आल्सो अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। सो आपकी फार्मेसी प्रोफेशन में यू मस्ट नीड सम मेंटोर, सम कोचिंग, एंड अगेन सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कीप इट अप, लेट्स सी हाउ दिस विल हेल्प यू। सम मोर लीडरशिप, हाउ टू डेवलप। ये आप जितनी बुक्स पढ़ेंगे, हजारों बुक पढ़े, यू कैन फाइंड सो मेनी थिंग्स। इसमें सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मेरे मुताबिक वो एक कम्युनिकेशन है। अच्छा, जो लीडर होता है वो कम्युनिकेट बहुत जबरदस्त करता है। प्लीज रिमेम्बर, अगर आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, जरूरी नहीं है कि, इधर मैं लफ्ज एक थोड़ा सा बताना चाहूँ। कम्युनिकेशन डजंट मीन यू मस्ट नो द इंग्लिश, यू मस्ट फ्लुएंट इन इंग्लिश। नो नो नो, नेवर एवर। इंग्लिश का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कम्युनिकेशन मीन कि आप इफेक्टिवली अपना पैगाम इन अ क्लियर, इन अ कंसाइज, इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर दूसरे को पहुंचा दें। दिस इज हाउ टू डेवलप, मेक ए गुड कम्युनिकेशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हाउ यू कैन गिव एन आंसर ऑन दैट। सो ये कम्युनिकेशन मीन्स कि आप
किस तरीके से अपना मैसेज दूसरों को पहुंचाते हैं, आप किस तरीके से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें फिर डिस्कस करूंगा पॉजिटिविटी। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने किरदार को पॉजिटिव रखना होगा, नंबर वन। दूसरा, आपने नर्चर करना है एम्प्लॉयज को, पॉजिटिव रहना है उसके साथ। ये जो दो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी इंपॉर्टेंट और भी बहुत सी है, फेयरनेस भी है, ह्यूमिलिटी भी है, कॉन्फिडेंस भी है, कमिटमेंट भी, इंस्पायरिंग, ऑनेस्टी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेट। ये बहुत बड़े एक डिफरेंट सीईओ से पूछा गया कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 कैंडिडेट हैं, उन 10 कैंडिडेट में से अगर वो ये कहते हैं कि आपके पास 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि कॉम्पिटेंट है, हाईली कॉम्पिटेंट, लेकिन उनमें एक ऑनेस्ट है लेकिन वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक? वो कहते हैं जी मैं ऑनेस्ट को, जो बंदा है मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। व्हाई? बिकॉज आई कैन इजीली डेवलप द कॉम्पिटेंसी। सो थिंक अबाउट दिस। ओके, दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कस इन द स्टार्ट के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि हम कह रहे हैं कि अभी तक उनका माशाल्लाह एक इन्फ्लुएंस है और ऑब्वियसली वो ता क़यामत तक चलना है। तो मोस्ट गोल ऑफ द लीडरशिप इज व्हाट, कि व्हेनेवर आई एम एब्सेंट, मैं अगर आज नहीं आ रहा, तो मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो उसी तरीके से काम करें, वो उसी तरीके से उस गोल को लेके चले। दिस इज द मेजर क्रक्स ऑफ द लीडरशिप गोल। अच्छा, ये कुछ थोड़ा सा हम स्टाइल्स को देखते हैं। अगेन वी डोंट हैव मच टाइम, मैं उसको नहीं चलाना चाहता। कुछ लोग जो लीडरशिप स्टाइल्स की हम जब बात करें, दे हैव डिफरेंट स्टाइल्स। कुछ कमांडिंग होते हैं, कमांड करना, जिस तरह हिटलर था, ऑलवेज कमांड, हिटलर ने हमेशा कमांड किया, वो ना नहीं करता था। आपके कुछ होते हैं विजनरी, कम विद मी, मेरे साथ चलें, आए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। कायद आजम इज ए विजनरी लीडर। एफिलिएटिव, पीपल कम फर्स्ट, एफिलिएटिव है, लाइक लूथर किंग, इट वाज वेरी एफिलिएटिव लीडरशिप, उसकी ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी। डेमोक्रेटिक, व्हाट डू यू थिंक? डेमोक्रेटिक में आपको नाम बहुत बड़ा जो नजर आएगा वो आएगा पोटन का, व्लादिमीर पोटन। पोटन ने जितना डेमोक्रेटिकली रशिया को ऊपर लेके गया, कोई नहीं ले जा सका। फिर आपका ये पेस सेटिंग होता है, डू एज आई डू नाउ, जिस तरह मैं करूं वैसे आप, एंड कोचिंग अनदर वन। लेकिन लुक एट, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। एक और थ्योरी कहती है एक 3 किस्म के, सिंपल, ऑटोक्रेटिक है, दूसरा एक होता है लसाइस फेर, डेमोक्रेटिक। अच्छा, ऑटोक्रेटिक नाम से नजर आया, डू एक्स, वो सिर्फ हुक्म देता है, प्लीज डू इट नाउ। तो दे आर मोर ऑफन डिस्क्राइब एज दोज विद अल्टीमेट अथॉरिटी एंड पावर ओवर अदर्स, ये ऑटोक्रेटिक होते हैं। एंड दीज लीडर्स टेंड टू मेक चॉइसेस बेस्ड अपॉन देयर ओन आइडियाज अलोन, and they do not listen to their team or seek input from others. These are the autocratic, purely autocratic होते हैं। ये laissez faire होते हैं, ये do x और y as you see fit। वो कहते हैं ठीक है, look at this, you can do x or y as you see fit। तो they have an attitude of trust actually and reliance on their employees। ये trust करते हैं employees के ऊपर, rely करते हैं। They do not micromanage or get too involved, ये ज्यादा involved भी नहीं होते, and they don't give too much instructions or guidance basically। so this is again a laissez-faire leadership। so डेमोक्रेटिक है, वो कहता है जी विच इज बेस्ट, पूछता है जी कौन सी चीज एक्स और वाई, लेट्स थिंक अबाउट, वो फिर वोट करते हैं एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। मेरे मुताबिक मिक्स इज द आइडियल वन, एंड मेनली दिस इज सिचुएशनल बेस्ड। क्योंकि सिचुएशनल बेस्ड लीडरशिप आजकल सबसे ज्यादा मशहूर है कि आप सिचुएशन देखें where you need autocratic, sometimes look at use autocratic. If you feel laissez-faire, use laissez-faire, and if you feel democratic, you use democratic. This is the right way to make your style and accomplish and achieve your goals. Okay, now I am taking a little bit stop here and I would like to share one of the video to you, all of you. ये video YouTube से मैंने download की, is an excellent video and I hope you will happy to see. It's a 1 minute video, okay? And I hope this, uh, I'm just sharing, yeah, few second only. Uh, Please somebody confirm me that they can see the slide of video. Yes, we can see. Okay, now I'm starting this 1 minute video.
Okay, thank you. I'm sharing this once again the screen. जी please confirm करें. You Excuse can me, see sir. the slide. Uh, Okay. Excuse me, sir. जी सर. Okay, fine. So let's move forward. I hope you enjoyed the video. Uh, okay. Few more Excuse me, slides. sir. We have. Sorry. Sir, sorry, but हमारी time limit reach हो गई है, so we have to Yeah. So we are start just again. 5 minutes. Yeah, 5 minutes more. Obviously. Okay. सर So एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम आपके साथ न्यू मीटिंग शेयर कर दें सो यू कैन इजीली कंटिन्यू और कोई क्वेश्चन आंसर्स भी आपसे हो सके. yeah, बिल्कुल. Just give me one. Yeah, hardly two slides only. Okay. ओके सर. So leadership in pharmacy, leadership crisis है बिल्कुल. ये हमारा crisis in pharmacy जैसे मैंने पहले कहा. ये transition phase में है and obviously unless farms should have considered the possibility of being called on to lead, I feel they may need not to seek develop the necessary skill to be successful in leadership role. मेरे ख्याल से I think learning about leadership is very important because highly trained pharmacists are targets for leadership role in which they will provide guidance on professional and obviously the patient care discussion or in the decision basically. Fine. So इसको हमने देखना है how can we nurture this. ठीक है. तो develop leadership skill. So growing your leadership capacity requires sustained and deliberate effort. Once again, I'm repeating a deliberate effort. So expanding your base of experience is an essential development strategy, I feel. And there are many strategies to companies that I have discussed many of them. ठीक है जी? So this is the last slide. So creators don't tell you what to do; they show how it is done. Thank you very much. I hope you learn all these things. Enjoy it. So where we are. Yes, Hassan, any question you have, if you have received any comment, so please, I'm happy to give the answer. Sir, we have received a query that is agile project management skill also like being a good leader or not. Sorry, project management, sorry. So basically this is a question that is project management skill required to be a good leader. Obviously, why not? So, for example, you have a project, for example, आप कहते हैं जी मैंने एक project start करना है. तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पेशेंट केयर मॉनिटरिंग के ऊपर आप कहते हैं जी मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि हम जितने जो लेंथ ऑफ स्टे उसको कम करना चाहते हैं. So whenever you start the project, you have some picture in your mind where I would like to go. You need team, you need some structure, you need some planning, you need some organization, you need some staffing, you need to control that, and then you have to audit this. And once you audit, you can move back again for replanning. This all requires leadership skills. Yes, of course, it is needed. So, Nida Bukhari, how do we practice not to be a micromanager? But, sorry, I missed that. It's appeared, then okay, now here. So, how do we practice not to be a micromanager, but a visionary leader? What do you suggest we practice on daily basis and we be persistent? So, जैसा कि मैंने कहा, अभी आप फिलहाल एज ए एम्प्लॉयर अगर काम कर रहे हैं, एज ए एम्प्लॉय सॉरी काम करें और किसी के अंडर काम करें, तो अभी तो फिलहाल आप उस प्रोसेस से गुजरे हैं जिस प्रोसेस से गुजर के आप लीडरशिप लेवल पे जाएंगे. तो पहला तो काम ऑब्वियसली आप माइक्रो मैनेजमेंट तो करेंगे. Now, once you done some work on that, तो अब आपने देखना है कि हम वहां पे क्या चेंज ला सकते हैं. मैंने आपको लफ्ज यूज किया था. The most important thing is the change. I have seen so many people here in my pharmacy as well. वो मुझे कभी कभार इतने अच्छे मशवरे देते हैं, कभी कभार इतनी अच्छी चीजें लेके आते हैं. क्यों? वो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना चाहते. दे वांट सम चेंज. उनका चेंज क्या होता है? हाउ कैन वी इम्प्रूव द पेशेंट केयर? हाउ कैन वी इम्प्रूव द मेडिकेशन थेरेपी? ये आपने सोचना है, देखना है कि व्हाट can I do differently? What change can I bring in the organization? Once you start thinking,
आप फिर एक विजन बना रही होंगी, ठीक है। वंस यू हैव ए विजन, तो आप उस माइक्रो मैनेजमेंट से बाहर आ रही होंगी, ठीक है। ये आपने डेवलप करना है, जैसे कि मैंने कहा, यू हैव टू नर्चर योरसेल्फ, यू हैव टू डेवलप दीज स्किल्स। सो वो करनी भी जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, लीडरशिप इज आल्सो ए वेरी गुड मैनेजर, यस ऑफ कोर्स, लेकिन बट ऑल मैनेजर आर नॉट गुड, वेरी गुड लीडर्स, वो लीडर्स नहीं हो सकते, ठीक है जी। खान have raised some hands, so maybe he can ask some question. Hello, Assalamu alaikum. Can you hear me? Walaikum assalam. Ji sir, my name is Aziz. I am an undergrad student for pharmacy and I'm studying PharmD in Lahore. अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि obviously you are in a very prestigious institute at Shaukat Khanum. तो सर ये आपने जो है ना स्लाइड्स में हमें मेंशन किया कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लेकिन पाकिस्तान में मैंने ऐसा को लीडरशिप पे कोई ऐसे वर्कशॉप्स यहाँ पे सेमिनार्स मैंने नहीं सुने कि जो यहाँ पे होते, मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ देम, आप इस पे थोड़ा मुझे इनलाइटन करें, थैंक यू। So your question about hands-on experience on leadership की बात कर रहे हैं आप? Yes. So this is one of the example. I am here now. पहले तो एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि I am here now and I am sharing with my own experience in each and everything. देखें, अगर आप देखें तो so many organizations ये leaderships के ऊपर symposium वर्कशॉप्स करवाती हैं और बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस भी वो करवाती हैं, एक्सरसाइज रिफ्रेशर कोर्स भी करवाती हैं। आप वो अटेंड करें, आई होप सो यू कैन गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। अगर आप वो अगर आप करें तो आई विल सजेस्ट, लम्ब से भी बहुत अच्छी होती हैं, 2-3 उनकी बहुत अच्छी, आई हैव सीन दिस। अगर आप 1-2 करें तो यू कैन गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बिकॉज वो आपको बाकायदा विजिट भी करवाएंगे उस जगह का, उस जहाँ पे वहाँ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आप एक्सपीरियंस कुछ थोड़ा सा देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एज ए ऑब्जर्वर। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग टू अटेन एक सेल्फ लर्निंग प्लस उनकी तरफ आप जाएं तो आई होप you can get some of the feedback, a very good feedback. Right. So Thank we you. have reached our time limit, so we should end here. Thank you, sir. Thank you for sharing your valuable insights and expertise with us today, and we appreciate your contributions to the field of pharmacy practice. And to our attendees, thank you for joining us today. And thank you, sir. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. Thank you all. Thank you all. Thank you very much. Allah Hafiz.